जाती है और मॉलिक्यूल्स एक ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट. नाउ व्हेन आई कंटिन्यू हीटिंग, इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा कि दूर भगा देगा दूसरों को हिला हिला के, है ना. When I get a lot of energy, I move very much. मेरे आसपास वाले मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे. So when I heat a solid, it becomes liquid. Why? उसके मॉलिक्यूल्स दूर चले गए इसीलिए. So when I heat a solid, molecules go away and it becomes liquid. अगर मैं इसको भी हीट करना शुरू रखूँ, it will become more away and becomes gas. So a solid like ice, when I start heating it, it will become liquid. When I continue heating the liquid, it becomes water vapor, steam, that is gas. Okay, so on heating a solid, it starts getting energy. Molecules get energy, molecules start vibrating, moving, they push each other and there is space created, which is why they become liquid first. जब ये स्पेस और ज़्यादा हो जाएगी, they become gas. Okay, now what happens when I cool? When I cool a solid, the molecules, they become more rigid. They have no energy and that is why they come together. Okay, ठंडी लगती है तो क्या होता है, हम और ज़्यादा पास में we will sit more closely. So same happens with the molecules also. जब उनको ठंडी लगती है तो ये और ज़्यादा पास में आ जाते हैं. They become close. Now solids में तो वैसे ही जगह नहीं थी. Still they come closer. बहुत ज़्यादा closer हो जाते हैं and they retain their shape. इनका shape becomes fixed. Okay. Now when I cool more further, और क्या होगा, ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाएंगे और ज़्यादा what you can say, they will have a very definite shape. Okay, और ज़्यादा अच्छे से शेप पकड़ के रखेंगे. When I cool a liquid, लिक्विड को कूल करने पर क्या होगा, जब मैं लिक्विड को कूल करती हूँ, इसके बीच की जो जगह है ये कम होती जाएगी. So eventually they will become compact like solid. So that is why when I have water and I cool it, after a certain point they will come very close and become solid, that is ice. इसलिए बर्फ बन जाती है. Okay. When I cool a gas, गैस को मैं जब कूल करूँगी, it will become liquid first. ओके, गैस को जब मैं बहुत ज़्यादा कूल करती हूँ वो लिक्विड बन जाता है बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगी और इसलिए वो लिक्विड बन जाएगा. गैस बिकम्स लिक्विड. सो वाटर वेपर विच इज इन द एयर, व्हेन इट इज कंडेंस, दिस इज कंडेंसेशन, it cools and becomes liquid, which is raindrops, barsat, isn't it? So the raindrops, they become water because of the gases, water vapor which is cooled, they become raindrops. When they get cooler और ज़्यादा तो they become snow. Okay, so this is called condensation. We have learned this. When water is heated, it evaporates, liquid becomes gas, water becomes water vapor, that is called evaporation. And when the liquid is cooled, it becomes when the liquid or the gas is cooled, it becomes the other stage which is going this way. Okay, gas बन जाएगा liquid, liquid बन जाएगा solid. So when the gas is cooled, it becomes liquid, which is water vapor, becomes rain. When the rain again is cooled further, it becomes snow. Okay, so this is what happens when we cool and we heat. Only thing you have to remember is when you
हीट करने से मॉलिक्यूल्स दे गो अवे, दूर चले जाते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट मूविंग अ लॉट. व्हेन यू कूल द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, और नज़दीक आ जाते हैं. सो हीट करने से गो अवे, कूल करने से कम क्लोजर. इन ऑल थ्री. सॉलिड्स को हीट करोगे तो वो दूर जाते हैं, लिक्विड्स को भी दूर गर्म करेंगे तो वो और दूर चले जाएंगे. गैसेस में भी व्हेन यू हीट द मॉलिक्यूल्स दे गो अवे. When you cool, they come closer for gases, liquids, solids. Okay, so molecules are getting heated, they go away. When they get cooled, they come closer. It remains same for all, solid, liquid हो या gas. Molecules सबका प्रॉपर्टी सेम है. हीट होने पर they go away, cool होने पर they come closer. Okay, so this is what happens when you heat and cool gases, liquids and solids. Okay, now there is one activity given on page 234 which you can do at home easily. So I would suggest you do it. You have to just take boiling water and cool cold water, okay, from the refrigerator. Put a bottle in both, and on the mouth of that bottle you have to put a balloon. थोड़ा सा फूला हुआ बलून आपको लगाना है माउथ पर बॉटल्स के. इन केस ऑफ द बॉटल विच इज केप्ट इन हॉट वाटर, और ज़्यादा गैस उसमें भर जाएगी और वो बलून और बड़ा हो जाता है. बट इन केस ऑफ कोल्ड वाटर, जो हवा हमने थोड़ी सी भरी थी बलून में, दैट ऑल्सो गोज अवे. ओके, पूरा पिचक जाएगा योर बलून. व्हाई इज दैट हैपनिंग? नाउ विद दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड, वी कैन से दैट व्हेन वी आर हीटिंग मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं. इसलिए द मॉलिक्यूल्स विच वर देयर इन द बलून, वो दूर चले गए, इसलिए बलून बड़ा हो गया. ओके, the molecules which were there inside the balloon, they moved away, and so the balloon is inflated, it becomes bigger. But in the case of cold water, the molecules which were away, they come closer, so balloon का size और कम हो जाएगा. Okay, so this is the experiment. You can easily do it at home. Next is physical and chemical change. Now physical change is a change which is not permanent. Okay, physical change ऐसा change है जिससे सिर्फ shape बदल जाता है and we get the original shape back. Okay, ऐसा change जो है इसे बोलते हैं physical change. For example, आइस क्यूब को मैं बाहर रख दूँ गर्मी में, और इफ़ आई हीट इट, what will it become? It will become liquid water. When I again freeze that water, I again get the solid ice back. So this is a physical change. Physical यानी body changes. So physically ये बर्फ़ से पानी हो गया, पानी से फिर से बर्फ़ हो गया. This is a physical change. Okay, even liquid turning into water vapor, and water vapor again turns back to water. This is a physical change. But sometimes what happens is a thing gets changed so much that you cannot get the original form back. For example, when I burn a paper, if I burn a paper, will I get the white ruled paper back? No, there is no chance. So this type of change is called chemical change, wherein the chemical structure has changed. The molecules have changed their chemical structure, and so you cannot get the same thing back. Okay, this is a chemical change. So physical change is a change in which no new substance
substance is formed and you have it is a reversible change. Reversible यानी फिर से जो original thing which was there you get it back. Chemical change is one in which new substance is formed. कोई नया ही substance बन जाएगा and so you cannot get a original state back. So this is called a irreversible change यानी जो कभी फिर बदल नहीं सकता है, कभी फिर रिवर्ट बैक नहीं हो सकता टू इट्स ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल व्हाट यू कैन से कंटेंट. ओके, वो ओरिजिनली जैसा था वैसा फिर से नहीं बन पाता है, इसलिए इसे इर्रिवर्सिबल चेंज वी कैन से. ओके, सो केमिकल चेंज इज इर्रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी, वो फिर से रिवर्स हो सकता है, इट इज रिवर्सिबल. Okay, so this is what we have learnt in this chapter. So please read the chapter thoroughly. Okay.